Good evening, dear students. Welcome to matrixdigilearn, and today we'll discuss about the computer awareness. आज आमे जो कंप्यूटर अवेयरनेस रे डिस्कशन करिबा पूर्व क्लास रा हमर किछि रिमेनिंग पार्ट रहि जाइतला जहा कि आमे पाखा पाखी अनेक गुडा क्वेश्चन भलो भलो जिंस डिस्कशन करितले तार रिमेनिंग पार्ट गुडा को आज आमे डिस्कशन करिबा तो तो क्वेश्चंस आर ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन ता तम देखो स्क्रीन रा आछि वर्तमान Okay, the first question for you: what is the shortcut? The first Indian web browser developed for Indian users. इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर इंडियन के हिसाब से और भारतीय ने उसको डेवलपमेंट किया है इमान को भितर को वेब ब्राउजर टा को हमरो भारतीय वेब ब्राउजर बा इंडियन वेब ब्राउजर बोली कह जाए ऑप्शंस आर गूगल क्रोम ऑप्शन बी मोजिला ऑप्शन सी इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड ऑप्शन डी एपिक तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी एपिक नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मेमोरी इनमें से किसको हम कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं हम जानते हैं कि कंप्यूटर का दोनों टाइप का मेमोरी होते हैं एक प्राइमरी मेमोरी होता है और एक सेकेंडरी मेमोरी होता है कंप्यूटर दीटा मेमोरी प्राइमरी मेमोरी वो सेकेंडरी मेमोरी तो प्राइमरी मेमोरी आम डाटा परमानेंट स्टोर करि पारुना बट सेकेंडरी मेमोरी डाटा परमानेंटली स्टोर होता है तो एमान भितर कोटा कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी ऑप्शंस आर फ्लॉपी डिस्क ऑप्शन बी हार्ड डिस्क ऑप्शन सी सीडी रोम एंड ऑप्शन डी रोम एनीवन कैन गिव द रिस्पांस इनमें से कौन सा प्राइमरी मेमोरी है वेरी इजी क्वेश्चन दिस वन हम किसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं रोम रीड ओनली मेमोरी और जिसको हम रोम बोलते हैं वो कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी होता है कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी होची रोम ओके व्हिच ब्राउजर वाज डेवलप्ड बाय गूगल व्हिच वेब ब्राउजर वाज डेवलप्ड बाय गूगल इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर को गूगल ने डेवलपमेंट किया है ऑप्शंस आर इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑप्शन बी फायरफॉक्स ऑप्शन सी सफारी एंड ऑप्शन डी क्रोम वेरी इजी आंसर एनीवन कैन गिव द रेस्पॉन्स एमानक भितर कोटा गूगल डेवलपमेंट करिछि द राइट आंसर इज ऑप्शन डी क्रोम क्रोम को गूगल ने डेवलपमेंट किया है ओके हाउ मेनी गीगाबाइट्स मेक्स ए टेराबाइट कितने गीगाबाइट एक टेराबाइट बनाते हैं कितने गीगाबाइट हेले गोटे टेराबाइट हुए ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 128 ऑप्शन बी 16 ऑप्शन सी 256 ऑप्शन डी 1024 The right answer is option D 1024 okay next question for you what is the full form of basic in context of the basic computer language ये जो बेसिक होता है एक कंप्यूटर लैंग्वेज होता है ये जो बेसिक रो एक्चुअली कंप्यूटर कॉन्सेप्ट अनुसार फुल फॉर्म टा कौन बेसिक कंप्यूटर भाषा के पूर्ण रूप क्या है ऑप्शन ए बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन
इनपुट आउटपुट कोड. ऑप्शन 2 बिगनर्स ऑल पर्पज सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन कोड. ऑप्शन सी बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. एंड ऑप्शन डी बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इनपुट कोड. इनमें से कौन सा राइट आंसर होता है? जो बेसिक का, जो कंप्यूटर लैंग्वेज होता है बेसिक, उसका फुल फॉर्म है. The right answer is option C, beginners all purpose symbolic instruction code. Basic ro full form hochi option 3. Next question for you. Who is among the following is expanded form of a VPN? हम जो कंप्यूटर का नेटवर्क बोलते हैं वो दोनों टाइप का नेटवर्क होते हैं. एक होता है साइज का, जो साइज के हिसाब से नेटवर्क होता है, और दूसरा वाला होता है क्या, पर्पोज के हिसाब से. तो हम बोलते हैं कि वीपीएन का फुल फॉर्म क्या है, वीपीएन का पूर्ण रूप क्या है. कंप्यूटर रे आमे जो नेटवर्क कहूचे वीपीएन, तार फुल फॉर्म ता कौन? ऑप्शन 1 वेरी प्राइवेट नेटवर्क. ऑप्शन 2 वेरी प्रेटी नेटवर्क. ऑप्शन सी वेरी पावरफुल नेटवर्क. एंड ऑप्शन 4 वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. For last option, virtual private network is the full form of VPN. Next question for you. Dash is used in banks to process large volumes of checks by recognizing the numbers printed at the bottom of the check. इनमें से क्या उपयोग बैंक में चेक को निचले भाग में जो रूप में नंबर दिया हुआ है उसको वेरिफिकेशन करने के लिए और उसको चेक करने के लिए, उसको संबंधित जो चेक करने के लिए चेक नंबर का कौन सा चीज होता है? एमान को भीतर को जिनसटा कंप्यूटर रो जो इंस्ट्रूमेंट आमे यूज करू, बैंक रे जतबे चेक दिया जाए, चेक रो तळे दिया जाइतबा नंबर को वेरिफिकेशन करिया पई यूज करा जाए जे चेक ता ठीक अछि ना नाही. Option A magnetic ink character recognition. Option B barcode reader. Option C optical mark recognition. And last option optical character recognition. क्या है वो चीज जो चेक के नीचे दिया गया नंबर को वेरिफिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है? The right answer is option A मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसको बोलते हैं हम MICR. MICR. The full form of MICR is magnetic ink character recognition. Okay. Next question for you. What does the S in protocol HTTPS signifies in the web address? उसका होता है, हम जब HTTP जो प्रोटोकॉल बोलते हैं, उस प्रोटोकॉल में कभी कभी HTTP भी दिखा जाता है, कभी कभी HTTPS भी दिखा जाता है. बेले बेले HTTP कोलन स्लैश स्लैश सामे देखू, बेले बेले HTTPS कोलन स्लैश स्लैश भी देखिए को मिले. ताले क्वेश्चन टा होची जो S थाए से S जेतबळे लागि थाए HTTP सहित सेटा एक्चुअली कोन कहंती? The full form is nothing but this is known as the hypertext transfer protocol secure. So option A, it is a secure protocol. So S in the HTTPS is a secure protocol. So A stands for secure. Next question for you. Dash was a virus which was first detected on ARPANET. जो ARPANET में वायरस का डिटेक्ट हुआ था फास्टली, वो वायरस का नाम क्या है? ऑप्शन ए चिपर. ऑप्शन बी स्ट्रॉनेक्स्ट. ऑप्शन सी कॉन्सेप्ट. ऑप्शन डी स्ट्रॉमवर्म. जो वायरस क्या है वो जो ARPANET से डिटेक्ट हुआ था? ARPANET अमेरिकन, वो होता है क्रीपर. क्रीपर जो वायरस होता है वो ARPANET से डिटेक्ट हुआ था. What does this PC icon on Windows desktop represent? What does
this PC icon on a Windows desktop represents. Options are an application launcher. Option B, a file that stores system updates. Option C, access to drives, files, and system properties. Option D, a shortcut to the control panel. दिस पीसी आइकॉन जो विंडोज डेस्कटॉप में होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डेस्कटॉप रे थिबा दिस पीसी आइकॉन एमानक भितर को जिंस को रिप्रेजेंट करे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? दिस आइकॉन रिप्रेजेंट्स द एक्सेस टू ड्राइव्स। मतलब इसका मतलब क्या होता है? हमारा कंप्यूटर में जो डिस्क ड्राइव कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क का पार्टीशन हो, जैसे कि पेन ड्राइव का कनेक्शन हो, या फिर जो भी डिवाइस का कनेक्शन हो, हमें कंप्यूटर रे जहां जहां डिस्क ड्राइव गुडा का अवेलेबल हुए, जेमति कि सीडी पाई कोन ड्राइव अछि, हम हार्ड डिस्क रे कोन कोन पार्टीशन गुडा को अछि, कि हमें जदि पेन ड्राइव का कनेक्शन करछे तार पाई ड्राइव टा कोन असाइनमेंट देछि, से सारा जिंस गुडा को, से सब जिंस गुडा को हमें जो डेस्कटॉप रे दिस पीसी आइकॉन पाउ ता भितर को गले ताको हमें देखि परिबा बा असेसिंग करि परिबा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। What is the purpose of the sleep button in Windows operating system? हम सब जानते हैं कि विंडोज जो ऑप्शन कुछ होते हैं, शटडाउन होते हैं, स्टैंड बाय ऑप्शन होता है, स्लीप ऑप्शन होता है, इसे कभी कभी अपडेट एंड शटडाउन भी होता है ऑप्शन जब हम शटडाउन करते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होता है? स्लीप का जो ऑप्शन होता है उसको क्यों हम यूज करेंगे? ऑप्शन ए, टू शट डाउन द सिस्टम। ऑप्शन बी, टू रिस्टार्ट द सिस्टम। ऑप्शन सी, टू सेव ऑल ओपन डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोग्राम्स while reducing power consumption, and option D, to delete temporary files। एमानक भितर कोटा होचे राइट ऑप्शन जहा कि आमे जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रे स्लीप ऑप्शन रो व्यवहार करि थाउ? एनीवन? The right answer is option C, that one is your जो सेव करते हैं हम, तो सेव all open documents and programs while reducing power consumption। तो हमारा जब पावर कंजप्शन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए ताको टिके कमे दबा पाई पावर कंजप्शन को आमे कोन करू ना स्लीप बटन को यूज करू। जेमति कि आमे कोन सी काम रे टिके बाहर को पळौचे तो जदि डेस्कटॉप को ऑन कर दे पळेबा पावर कंजप्शन हबो, तो स्लीप मोड रे रखि देले कंप्यूटर बंद तो ही नथिबो बट ता लाइट फाइटोडा सब ऑफ ही जीवो। सो दिस पर्पज बा एटा होची उद्देश्य स्लीप ऑप्शन रो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रे। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। These things are very very simple but very very useful, so you should remark all these things। थोड़ा का बहुत तो नॉर्मल जिनस भली लगे किंतु बहुत सारा तार जानिबार थाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। हाउ डू यू व्यू हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स इन फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? हाउ डू यू व्यू हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स इन फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम?
तो विंडोज एक्सप्लोरर में जो फाइल और फोल्डर छुप जाते हैं, कभी कभी छिप जाते हैं बहुत सारे चीज, हम उसको थोड़ा सा देखना चाहेंगे क्या है वो चीज जो छुपा हुआ है। जो जो जिनसोड़ा केबे केबे लुचि जाई थाए फाइल एक्सप्लोरर आमे देखिबा को चाहू, एक्सप्लोरिंग करिबा को चाहू कोन कोन अछि, तो आमे सेटा केमिति करिबा, हाउ कैन इट बी डन? ऑप्शन ए, go to view, select show hidden items. Option B, right click, select view hidden files. Option C, settings, select hidden files. And option D, go to edit, select show hidden items. Which option among these is the right option? फाइल एक्सप्लोरर का यूज क्यों करते हैं हम और उसका उद्देश्य क्या है? कहीं आम फाइल एक्सप्लोरर यूज करिबा, जदि भी यूज करूचे ताले केमिति करिबा? एनीवन? द राइट आंसर इज व्यू को जाना होगा, सिलेक्ट शो हिडन आइटम्स में क्लिक करके हम देख सकते हैं वो कौन सा चीज को छुपा हुआ है और कौन सा फोल्डर में क्या चीज है, तो सारी चीज हमको दिखाई देगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। In dash view of Windows Explorer, one can see miniature images of graphics and HTML files and previews of file contents. एमानक भितर कोटा विंडोज एक्सप्लोरर जो कि छोट छोट पिक्चर आकार, छोट छोट इमेज आकार आम सब फाइल कंटेंट्स गुड़ाक देखिपर। ऑप्शन ए टाइटल्स, ऑप्शन बी फिल्म स्क्रिप्ट, ऑप्शन सी लिस्ट, ऑप्शन डी थंबनेल्स। सेटा ना आकार ही नथिबो बट ताकू गोटे छोट छोट पिक्चर आकार सब देखे दउथबो, तो सेही भली आमे देखिबा को ले को ऑप्शन को यूज करू। सो थंबनेल्स इज द राइट आंसर, जो तरे कि आमे से कंटेंट्स गुडा देखि परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। In Windows, we go to dash option in control panel. In Windows, we go to dash option in control panel to uninstall a program from our computer. आमे एमानक भितर को ऑप्शन को जिबागु पड़िबो जदि कोनोसी गोटे प्रोग्राम आमे अननेसेसरी भाबुथिबा ताको अनइंस्टॉल करिबा। इनमें से कौन सा ऑप्शन होता है जो हमारा ऑन इंस्टॉल करने के लिए किसी भी प्रोग्राम को यूज किया जाता है? ऑप्शन ए डिफॉल्ट प्रोग्राम्स, ऑप्शन बी एक्शन सेंटर, ऑप्शन सी डिवाइस मैनेजर एंड ऑप्शन डी प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। कंट्रोल पैनल में और सेटिंग्स में जो भी हो, न्यू वर्जन से वो सेटिंग्स होता है और ओल्ड वर्जन में उसको कंट्रोल पैनल बोलते हैं। पुराना वर्जन जमती को विंडोज 7 रे हमें ताको कंट्रोल पैनल कहउतिले, किंतु विंडोज 8 ऑनवर्ड्स सेटा सेटिंग्स से जाइछि। जहां भी हो ता भीतर को ऑप्शन को हमें यूज करिथौ। द राइट आंसर इज प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। तो बहुत सारा तो ऑप्शन थाए, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स को गले आमे कोनोसी गोटे प्रोग्राम को जहा को अननेसेसरी भाबुतिबा ताको इजीली हमें अनइंस्टॉल कर देई परिबा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। IBM 701, IBM 702, IBM 650 are example of IBM 701, IBM 702, IBM 650 को हम किसका उदाहरण से ले सकते हैं और वो किसका उदाहरण होता है? IBM 701, IBM 702, IBM 650 कहार उदाहरण? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर या फिर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर?
These are the very important questions. आमे जेते सहज भाबू सेते सहज क्वेश्चन आसे ना तो एगुडा को गोटे गोटे फास्ट जनरेशन रो कंप्यूटर बोली कुआ जाय थे. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. इंडिया फास्ट सुपर कंप्यूटर पारम. इंडिया रो सुपर कंप्यूटर पारम 8000 was launched in the year. India's fast super computer पारम 8000 कौन सा वर्ष में रिलीज किया गया? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1989 एंड ऑप्शन डी 1992. इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है? पारम टा जोटा हमें कहूचे सुपर कंप्यूटर प्रथम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर भारतर सेटा केबे रिलीज हेतिला? The right answer is 1991. 1991 मसीहा तार रिलीज हेतिला. Okay. Next question for you. Which of the following was used as the main electronic component in first generation of computer? इनमें से कौन सा चीज जो कंप्यूटर का जनरेशन होता है फर्स्ट जनरेशन में बेसिक कंपोनेंट के हिसाब से यूज किया गया? ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन बी माइक्रोप्रोसेसर, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट और आईसी, ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर्स. एमानक भितरु कोउटा फर्स्ट जनरेशन रो बेसिक कंपोनेंट रूपे यूज करा जाउथिला? एनीवन? Right answer is the vacuum tube. Next question for you. Integrated circuit are made of which of the following? हम जानते हैं जो आईसी बोलते हैं हमें जो आईसी बोली कहूचे से आईसी टा को कंपोनेंट्स बा को उपादान रे तयारी हिची? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी ग्लास एंड ऑप्शन डी आयरन. आईसी एमानक भितर को जिंस रे तयारी हिची? द राइट आंसर इज सिलिकॉन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. लो लेवल लैंग्वेजेस आर आल्सो नोन एज. लो लेवल लैंग्वेज को हमें अदरवाइज कौन बोली कहि थाउ? जो ट्रिपल एल कहउछ बा लो लेवल लैंग्वेज. कंप्यूटर तो दुई प्रकार लैंग्वेज यूज करा जाय. गोटे लो लेवल लैंग्वेज, गोटे हाई लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज को ट्रिपल एल कहंती एंड हाई लेवल लैंग्वेज को एचएलएल कहंती. तो माय क्वेश्चन इज लो लेवल लैंग्वेज आर आल्सो नोन एज. लो लेवल लैंग्वेज को हम दूसरे नाम से किस तरह से जानते हैं? ऑप्शन ए सोर्स कोड, ऑप्शन बी मिडिल कोड, ऑप्शन सी हाई लेवल लैंग्वेज या फिर ऑप्शन डी मैसिन लैंग्वेज. द राइट आंसर इज मैसिन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं वो होता है लो लेवल लैंग्वेज का दूसरा नाम. डिफरेंस इंजन वाज इन्वेंटेड बाय डैश and he was from dash. डिफरेंस इंजन जो कुछ चीज हम जाते हैं कंप्यूटर के जो हिस्ट्री में कंप्यूटर के इतिहास विषय भी जानिथिबा दरकार. तो हमर बहुत सारा जिंस आसला जेमति कि हमर जोटा कहउछ अबाकस बा सोरोबान, पास्कल लाइन, कैलकुलस, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन. नेक्स्ट तमरो होची जोटा कहउछ एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर. वो क्वेश्चन डाला डिफरेंस इंजन वाज इन्वेंटेड बाय डैश एंड ही वाज फ्रॉम. कहा द्वारा एटा डेवलपमेंट हेतिला एबो से कोठरो माने को कंट्री रो से? ऑप्शन ए चार्ल्स बाबेज यूके, जॉन लॉजबर्ट स्कॉटलैंड, डब्ल्यूएच फॉक्स टैबलेट इंग्लैंड एंड पास्कल फ्रॉम फ्रांस. who have developed the difference engine and belongs to which country? Anyone? चार्ल्स बाबेज फ्रॉम यूके, यूनाइटेड किंगडम. यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड. तो डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन both the engines are developed by the Charles Babbage. As the concept of computer first derived by Charles Babbage, so Charles Babbage is also known as the father of computer. Okay, next question for you.
The stored program concept was originally proposed by. Stored program concept कहा द्वारा आस्थिला? ऑप्शन ए अलान ट्यूरिंग, ऑप्शन बी डेनिस रिची, ऑप्शन सी जॉन बॉन न्यूमन एंड ऑप्शन डी स्टेव वाइजनेक। इनमें से कौन हमको स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट दिए हैं? ऑप्शन ए अलान ट्यूरिंग, ऑप्शन बी डेनिस रिची, ऑप्शन सी जॉन बॉन न्यूमन एंड ऑप्शन डी स्टेव वाइजनेक। जॉन बॉन न्यूमन, तो इनको भी हम बोलते हैं कि कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर का डिजाइन दिए है वो जॉन बॉन न्यूमन। ओके, यूजिंग डैश we can send messages, images, audios and videos to friends, relatives, colleagues and customers। इनमें से कौन सा चीज को हम यूज करते हैं जिसको हम मैसेज सेंड करने के लिए, इमेज सेंड करने के लिए, ऑडियो सेंड करने के लिए, वीडियो सेंड करने के लिए? किसको? हमारा फ्रेंड को, हमारा रिलेटिव को, हमारा कलीग को, या फिर हमारे कस्टमर को करते हैं कुछ मैसेज। क्या है वो चीज? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी क्वेरा, ऑप्शन सी प्रिंटर्स एंड ऑप्शन डी नॉन। एनीवन? कौन सा चीज को हम यूज करते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिस वन। वी ऑल नो दैट इनमें से यूज करते हैं फेसबुक को। कभी कभी हम ढूंढेंगे कि यहाँ पर ईमेल नहीं है, तो हमारा तो ईमेल में ही सारे चीजें होते हैं, क्योंकि क्या फेसबुक भी इसको नहीं यूज करते? हम मैसेंजर भी यूज करते हैं, फेसबुक भी यूज करते हैं, व्हाट्सएप भी यूज करते हैं। हमें सोशल मीडिया रे सारा जिनसोडा भी यूज करूचे भी, ए सब जिनसोडा भी शेयरिंग करि परिबा। हमरो कोनोसी इंफॉर्मेशन को बा मेसेज को, इमेज को, ऑडियो को, वीडियो को जदि फ्रेंड, रिलेटिव, कलीग्स बा कस्टमर को सहित शेयरिंग करिबा, तो इमान को भीतर जदि किछि ईमेल रो भी ऑप्शन नाही, फेसबुक भी तो यूज करा जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। sometimes questions may be come in different exams to confuse you। केबे केबे एमती भी क्वेश्चन आसे तुमको कंफ्यूज करिया पे, तमे मने मने भाबुथिबो फेसबुक रे तो मु रील्स को नहीं की पकाए, फेसबुक रे तो मु फोटो पकाए, फेसबुक रे तो बहुत सारा वीडियो मु अपलोड करे, तो एटा केमती हबो? हेई भी पारिबो, ठीक एनालिसिस करो एंड तमे जानि परिबो थ्रू मैसेंजर्स we can be transfer messages like these things। okay, next question for you। buying or selling goods electrically is known as। आमे इलेक्ट्रॉनिकली मेथड रे जदि किसी जिनस को किणीबा चाहिबा बा बिकिया को चाहिबा, हम जब कुछ खरीदना चाहते हैं या कुछ फिर बेचना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जो इलेक्ट्रॉनिक कुछ डिवाइस के यूज करके, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए मल्टीमीडिया, ऑप्शन बी ई कॉमर्स, ऑप्शन सी फाइनेंस, ऑप्शन डी मनी कंट्रोल। हम इलेक्ट्रिकली जो बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज कैरीज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? द राइट आंसर इज ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो कॉमर्स का मतलब होता है हमारा जो चीज होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस को ट्रांसफर करना। कॉमर्स इज रिलेटेड टू ऑल दोज एक्टिविटीज that can be transfer or goods or services from the place of production to place of consumption। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो होता है तो उसको ई कॉमर्स ही तो बोलेंगे ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। वर्ल्ड वाइड वेब is a graphically interface for the internet that was first introduced to public by। वर्ल्ड वाइड वेब जो जिसको हम बोलते हैं www, वो जो W3 भी होता है वो इंट्रोड्यूस तो हुआ है, लेकिन उसको इनमें से कौन हमको फास्ट दिए हैं? वो हम जो चीज यूज करते हैं www, कौन से इनमें कौन उसको इंट्रोड्यूस किए हैं? ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन सी सर्जी ब्रेन एंड लैरी पेज, ऑप्शन डी
स्टेप जॉब्स, एनीवन? वर्ल्ड वाइड वेब का कॉन्सेप्ट हमको किसने दिया है? एक कॉन्सेप्ट को कैरी करने के लिए हम किससे आइडिया लिए हैं और कौन वो आइडिया दिए थे? उनका नाम है टीम बर्नर्स-ली। टीम बर्नर्स-ली एक्चुअली आमर वेब कॉन्सेप्ट रो बा www रो स्रष्टा जनक बोली कहा जाए। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विंडोज वर्जन? इनमें से हमारा जो विंडोज का वर्जन आया है, माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज रो इमानक भितरु कोटा गोटे वैलिड वर्जन नुह? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। विंडोज 9 एमिति कौन सी वर्जन नहीं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 8 आछि, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 आछि, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 भी आछि। ओके, व्हिच वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज? इनमें से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो एमएस विंडोज बोलते हैं उसका फर्स्ट वर्जन क्या है? ऑप्शन ए विंडोज 1.0, ऑप्शन बी विंडोज एक्स, ऑप्शन सी विंडोज विस्टा एंड एमएस डॉस। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज रो एमानक भितरु कोटा फर्स्ट वर्जन? द राइट आंसर इज विंडोज 1.0। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स इज यूज्ड टू मिनिमाइज all applications and display desktop in Windows operating system? Which of the following keyboard shortcuts, इनमें से कौन सा वो कीबोर्ड शॉर्टकट होता है जो सारे विंडोज जो ओपनिंग होता है उसको मिनिमाइज करके टास्क बार में रख लेता है, टास्क बार में पुट कर लेता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, ऑप्शन बी विंडोज लोगो प्लस डी और विंडोज की प्लस डी, ऑप्शन सी विंडोज की प्लस सी एंड नॉन ऑफ दीज। हमारा सारा प्रोग्राम को मिनिमाइज करके टास्क बार में रख लेता है। विंडोज की प्लस डी मतलब का इसका मतलब होता है कि हमारा सारा विंडोज तो मिनिमाइज होता है स्टार्ट बटन से एंड से, लेकिन वो बोले कि डेस्कटॉप भी हमारा ऊपर आना चाहिए। तो डेस्कटॉप को ऊपर लाने के लिए सारे विंडोज मिनिमाइज हो जाएगा और डेस्कटॉप जो होता है वो बिगिनिंग में आ जाएगा। सब विंडोज मिनिमाइज हो जहां जहां ओपनिंग हेइथो एवं डेस्कटॉप समस्त ऊपर को पळे आसीबो। तो विंडोज की सहित डी मारिले एटा पॉसिबल हे परिबो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। Which of the following key of which of the following key of keyboard are called modifier keys? एमानक भितरु को की गुडा को आमे मॉडिफायर की बोली कहू? ऑप्शन ए कंट्रोल, ऑप्शन बी शिफ्ट, ऑप्शन सी एंड, ऑप्शन डी ऑल्ट। ऑप्शन 1 A, B and C, option 2 A, B and D, option C A, C and D, option 4 B, C and D। इनमें से कीबोर्ड में कौन सा चीज को कौन सा की को हम मॉडिफायर कीज बोलते हैं? कीबोर्ड में डिफरेंट टाइप ऑफ कीज होते हैं। तो डिफरेंट टाइप कीज में हम बोलते हैं जो मॉडिफायर की, किसको बोलते हैं मॉडिफायर की? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम एन इमेज? तो इमेज में जो होता है
उसको टेक्स्ट के हिसाब से हम कन्वर्ट करेंगे, तो कौन सा चीज को यूज करते हैं? वो होता है ओसीआर। ओसीआर का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। हम सब जानते हैं बार कोड में कभी प्रोडक्ट का जो पिछले वाले में होते हैं जो लाइंस होते हैं उसको स्कैन करके प्रोडक्ट को डिटेल फाइंड आउट करते हैं। एमआईसीआर तो पूर्व मु कही आसी जे आमे यूज करूचे बैंकिंग क्षेत्र रे चेक नंबर को वेरिफिकेशन करबा पई। ओएमआर भी आमे समस्त जानिचे जे जो ओएमआर सीट भरुचे ताको वेरिफिकेशन करबा पई। सो जदि आमे कोनोसी टेक्स्ट को लेखा को इमेज को कन्वर्ट करिया को चाहिबा, सो दैट इज द ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। ओसीआर का जो कांसेप्ट भी तुमको बता दिया गया है यहाँ पर। ओसीआर रो सब किसी कांसेप्ट उडा तुमको एटी बतई दिली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। सी प्लस प्लस, हम सब सुनते हैं कि सी प्लस प्लस, जावा, सच टाइप ऑफ थिंग्स। सी प्लस प्लस इज गैस an operating system, a programming language, a software, none of these। सी प्लस प्लस क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सी प्लस प्लस कंप्यूटर में क्या होता है? a programming language। This is the programming language। C, C++, Java, Python, these are known as the programming languages। Which is not an operating system। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS DOS और माइक्रोसॉफ्ट दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो C++ that is not a operating system। C++ टा गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम नुह, जस्ट पूर्व टिके मु कहली that is the programming language। okay, next question for you। which of the following which of the following is a complementary language that helps style the HTML markup codes used to create and design websites and web pages? Which of the following is a complementary language that helps style the HTML markup code using to create and design websites and web pages? एमानक भितर कोटा से लैंग्वेज जहाँ को कि आमे व्यवहार करू HTML, जहाँ कि बेसिकली आमे कहिताउ कोन वेब पेज रो डेवलपमेंट करिबा पई। से जो वेब पेज को टिके भलो से डिजाइनिंग करिबा पई, वेब पेज को टिके भलो कि अट्रैक्टिव करिबा पई एमानक भितर को जिनसडा बा को लैंग्वेज को यूज करा जाए? ऑप्शन ए जावा, ऑप्शन बी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बा SQL जोटा कहउछ, ऑप्शन सी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर जोटा कहउछ PHP, ऑप्शन डी जोटा कहउछ कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये तो सब किछि लागुथिबो तुमको निश्चित भाबे वेब पेज रो डेवलपमेंट तो सब तो यूज करा जाए। जावास्क्रिप्ट भी हमें यूज करिथौ, तो केबे केबे सुनिथिबो PHP भी यूज करा जाउची, केबे केबे CSS भी यूज करा जाउची। पर्टिकुलरली मो जानिबा को चाहूची which option is or which that language is used to create and design websites? वेबसाइट को डिजाइन किया जाता है इसमें, और उसको थोड़ा सा भी हम क्या करते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स और सीएसएस कोड को हम जनरेट भी कर सकते हैं, जैसे कि HTML में हम लिखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क DOC TOIP HTML, वैसे भी लिखते हैं और डिजाइन भी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। मैच द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स विद देयर क्रिएटर्स। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, केबे केबे एमती भी आसे, हमको भी माइंड रे सेटिंग करना बागो पड़िबो मते केमती एटा को सॉल्व करिवार अछि। तो लिस्ट 1 रे देथिबो HTTP, ऑप्शन बी HTTP, ऑप्शन सी FTP, ऑप्शन डी SMTP।
एंड लिस्ट 2 रे देछि एउडा सब तुमको जेमति कि अलान एम स्किपमैन ऑप्शन डबल आई टिम बर्नर्स ली ऑप्शन ट्रिपल आई रॉबर्ट ई खान एंड बिंटन ग्रेसॉफ एंड ऑप्शन आई बी अभय भूषण एनीवन ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑप्शन ए मैच करछि एचटीटीपी जोटा को टीम बर्नर्स लिंक द्वारा डेवलपमेंट ऑप्शन बी जोटा को आई जोटा एसएसटीटीपी सेटा एलन एम स्किपमैन एंड ऑप्शन सी जोटा होची आईबी एफटीपी रो डेवलपर होची बा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल रहउची अभय भूषण एंड ऑप्शन डी जोटा को एसएमटीपी बा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तारो डेवलपर होचंती तमरो रॉबर्ट ई खान एंड बिंटन ग्रेसॉफ दिस वन इज सॉल्व्ड they are the developers of such things http का डेवलपर ए है एसएचटीटीपी का डेवलपर ए है एफटीपी का डेवलपर दिस पर्सन एंड एसएमटीपी का जो डेवलपर होते हैं वो होते हैं तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू before that short forms also you can note down or take the screenshot तमे मान को एडो सब स्क्रीनशॉट भी नहीं परिबो एचटीटीपी माने होची हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एचटीटीपीएस माने होची हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर एफटीपी माने फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटीपी माने सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एचटीटीपी को बेसिकली वेब पेज को लोड करिया पई यूज करा जाय एफटीपी को बेसिकली तमरो फाइल ट्रांसफर करिबा पई कंप्यूटर्स माने भीतर व्यवहार करा जाय एंड एसएमटीपी को बेसिकली ईमेल को सेंडिंग करिया पई यूज करा जाय ईमेल क्षेत्र रे तीनटा प्रोटोकॉल यूज करा जाय गोटे एसएमटीपी गोटे आईएमएपी आ गोटे होची पीओपी ओके लीव दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कीवर्ड इन सी लैंग्वेज सी लैंग्वेज में जब हम यूज करते हैं थोड़ा सा कीवर्ड का यूज करते हैं कीवर्ड क्या है मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं कीवर्ड द रिजर्व वर्ड्स इन द लैंग्वेज that have the specific meaning these meanings cannot be changed and that names cannot be used for the other purposes that have a special meaning that has a specific meaning to the compiler keywords रो किछि फिक्स माने थाए से माने गुडा को सेया तमे ताको अलगा कोनोसी काम पई यूज करि परिबो नै जंदि कि वेरिएबल रो नाम डिक्लेयर करिबा मॉड्यूल रो नाम डिक्लेयर करिबा फंक्शन रो नाम डिक्लेयर करिबा ए सब काम पई से यूज करा जाय परिबो तारो स्वतंत्र माने जेतेबेले ताको कोनोसी गोटे डेवलपर डेवलपमेंट करिछि जेमति कि सी रो डेवलपमेंट करचंती हमरो किए तांको ना होची हमरो सी रो डेवलपर होचंती हमरो किए सी प्लस प्लस रोचंती जावा रोचंती किए जावा रोचंती वेरी कंफ्यूज्ड थिंग्स ओके जावा रोचंती हमरो some persons okay I will remind that which of the following is valid keyword in C रे मान को भीतर कोटा valid keyword नो floating enumeration integer and void सी लैंग्वेज रो डेवलपर तांको ना होचे डेनिस रिची ओके डेनिस रिची इज द डेवलपर फॉर द सी लैंग्वेज आई हैव रिमाइंड इट ओके इमान को भीतर कोटा वैलिड कीवर्ड नुह सॉरी वैलिड कीवर्ड void आ फ्लोटिंग इंटीजर एमी तो व्यवहार हुए नी इंट बोली लिखा जाए फ्लोट बोली लिखा जाए एंड सो दीज आर नॉट द वैलिड कीवर्ड्स A void valid keyword in C. It is used to indicate that a function does not have any return type or specify any generic value. Okay, next question for you. Which language is used to create a macro in Microsoft Excel?
हम जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते हैं मैक्रो का जनरेट करना पड़ता है एमान को भीतर कोटा तमरो यूज करा जाए व्हिच लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट ए मैक्रो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्रो को यूज करने के लिए को लैंग्वेज रो यूज करा जाए ऑप्शन ए जावा ऑप्शन बी विजुअल बेसिक ऑप्शन सी पीएचपी एंड ऑप्शन डी सी सो विजुअल बेसिक रे आमे मैक्रो रो जनरेट करथौ एंड दैट लैंग्वेज सपोर्ट फॉर द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस इनमें से इनपुट डिवाइस का एग्जांपल नहीं है एमान को भीतर कोटा इनपुट डिवाइस नुह विथ कैमरा माइक्रोफोन स्कैनर एंड प्लॉटर प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है प्लॉटर होची ओटा आउटपुट डिवाइस बाकी विथ कैमरा माइक्रोफोन एंड स्कैनर ऑल आर द इनपुट डिवाइसेस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑन ए कंप्यूटर कीबोर्ड द शिफ्ट एंड ऑल्ट की आर एग्जांपल ऑफ कीबोर्ड रे हमें बहुत सारा की देखु छी तो ये जो हमें कीबोर्ड रे की गुडा को देखु छे ता भीतर न्यूमेरिक की बा कर्सर मूवमेंट की बा मॉडिफायर की बा फंक्शन की बोली हमरो शिफ्ट ऑल्ट को कुआ जाए शिफ्ट या ऑल्ट को कीबोर्ड रो हमरो को की बोली कुआ जाए ऑप्शन सी दैट आर नोन एज द मॉडिफायर कीज हमें कीबोर्ड रे जति की देखु ताको मुख्यतः पांच भाग रे विभक्त करा जाए कोन कोन फर्स्ट होची फंक्शन कीज माने जो F1 तारु F12 पर्यंत की देखुछ सेउडा को फंक्शन की कहंती ए ठारू जेड पर्यंत की देखुछ ताको अल्फाबेट की कहंती 0 ठारू 9 पर्यंत सेपरेटली गोटे जगह रे अछि ताको कहंती न्यूमेरिक की अगेन अल्फाबेट पाखरे पुणी आउथरे मिसी की अछि ताको कहंती से जगह रे हमर अल्फा न्यूमेरिक की एबे हमें जिबा जे हमर जोटा रहिला आउ जो की गुडा रहिला ताको मॉडिफायर की बोली कहंती से मॉडिफायर की को केते जण स्पेशल कैटेगरी रे मध्ये बांटी देंती गोटे कहंती हमर स्पेशल कीज आउडा को नेविगेशन की कहंती ताले ए जो कहउछ तमे शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल तोडा गोटे मॉडिफायर की बोली कहै छै ओके बस स्पेशल की बोली मध्ये कहै छै ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हिच इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंप्यूटर लैंग्वेज एमानको भितरु कोटा गोटे कंप्यूटर लैंग्वेज बा कंप्यूटर भाषा आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोली तमे कहि परिबो इनमें से कौन एक कंप्यूटर लैंग्वेज है ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑप्शन बी सी प्लस प्लस ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड ऑप्शन डी एमएस ऑफिस वेरी इजी क्वेश्चन सी प्लस प्लस मो जस्ट टिके आगुर भी कहउथली ताको डिफरेंट स्टाइल टिके पचारिथली सी प्लस प्लस टा ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ बाकी सारा जहा रहिला सब गोटे गोटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू अरेंज the following programming language in an ascending from according to their year development हमें ए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गुडा को देइछि ताकू जहा परे जे डेवलपमेंट हेछि सेही अनुसार टिके सजेइबा ऑप्शन ए कोबल ऑप्शन बी सी ऑप्शन सी जावा एंड ऑप्शन डी फोर्ट्रान तो ताकू टिके अरेंजमेंट करिबा कहा परे कोटा ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 या फिर ऑप्शन 4 ठीक है अरेंजमेंट करी लिखिबा क्वेश्चन गुडा को बहुत टेक्निकली एमती आसे तो तुमको एही शैली रे ही प्रिपेयर होबा को पड़िबो बहुत सहज लागुथिबो किंतु टिके एपर सेपड हेले भी भूल हे जिवो ताले राइट सीक्वेंस होची ऑप्शन डी फर्स्ट फुटरान आस्तिला जहाउ कहूचे हमें फार्मूला ट्रांसलेशन नेक्स्ट आसला हमरो ए जोडा कहूचे कोबल कंबाइंड बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज नेक्स्ट आसला तमरो बी जोडा कहूचे सी लैंग्वेज एबो जावा ए बहुत रिसेंटली 1972 रे आसला सी एंड जावा तमरो एबे 1991 रे डेवलपमेंट 1995 रे 1995 मसिया रे एबे नाम भी मन पड़ी गेला जावा आसीवा सहित तार डेवलपर होसन जेम्स गोस्लिंग सी रो डेवलपर होसन हमरो डेनिस रिची देखो तो सही टॉपिक आसला बेले को समान का नाम परफेक्टली भी रिकॉल हे गेला ओके सी रो डेवलपर होचंती हमरो डेनिस रिची एंड जावा रो डेवलपर होचंती हमरो जेम्स गोस्लिंग सो जावा टा होची पूरा रिसेंट सो लास्ट को रहिबो ता पूर्वरु रहिबो मोर बी माने जोटा कहउछ सी टा जोटा डेनिस रिचिंग द्वारा 1997 टू
बाकी से दुटा तक फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज डी आउ ए ओके डी ए बी सी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू one is 1954 one is 1957 ओके कोबोल का डेवलपमेंट हुआ था 1957 में और सी का जो 1972 में जावा का 1995 में जो बोला मैं वो सारी चीज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟିଂ ଡିଭାଇସ୍ ଅପସନ୍ ଏ ମେକାନିକାଲ ମାଉସ୍ ଆଣ୍ଡ କିବୋର୍ଡ ऑप्शन बी लाइट पेन एंड कीबोर्ड ऑप्शन सी ऑप्टिकल माउस एंड कीबोर्ड ऑप्शन डी ट्रैक बॉल एंड ऑप्टिकल माउस इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है पॉइंटिंग डिवाइस इनमें से क्या है ऑप्शन डी ट्रैक बॉल एंड ऑप्टिकल माउस ट्रैक बॉल एंड ऑप्टिकल माउस आर द पॉइंटिंग डिवाइसेस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू Computer performs 5 basic operations which are input, dash, output, storage and control. Computer basically 5टा काम करिथाय से 5टा काम भितर 4टा काम ऑलरेडी डिस्प्ले हो जाइछि इनपुट आउटपुट स्टोरेज एंड कंट्रोल तो एमान को भितर आउ गोटे काम बाकी रहि जाइछि ऑप्शन ए कंप्यूट ऑप्शन बी प्रोसेस ऑप्शन सी कंपाइल एंड ऑप्शन डी एग्जीक्यूट कंप्यूटर जो 5 चीज परफॉर्म करते हैं वो उसमें से 4 हमारा लिखा गया है यहाँ पर और एक डैश भी दिया गया है तुमको भरना पड़ेगा वो चीज क्या है जो कंप्यूटर करता है The right answer is process. First input, then process, then storage, then output and control. Okay. What is input? कंप्यूटर में ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम कंप्यूटर में कभी कभी बोलते हैं व्हाट डू यू मीन बाय क्लिक लेकिन कोई उसको नहीं जानता केबे केबे हमें कंप्यूटर को क्लिक माने कौन कहता तो क्लिक माने कहि परिबनी तो क्लिक माने कहबो क्लिक माने तो क्लिक माने क्लिक नुहे place the mouse pointer on the desired object then press and release the mouse button in quick succession कौन सी जिंस पर माउस पॉइंटर को रखी माउस बटन को प्रेस करी छाड़ीबा एक्टिविटी को हमें क्लिक बोली को तो एत बड़ डेफिनेशन भी कहीं जानि नथिबे तो मु कहिबा कथा व्हाट इज द इनपुट क्वेश्चन जो ऑप्शन आछि व्हाट इज द इनपुट रा एक्चुअली माने कोन ऑप्शन ए द रिजल्ट डिस्प्ले बाय द कंप्यूटर ऑप्शन बी सेंडिंग डाटा एंड कमांड्स टू द कंप्यूटर Option C, a place to save results. Option D, marked down by computers to produce result. Input का मतलब क्या होता है? Input का माने कौन? तो sending data and commands to the computer. कंप्यूटर का डाटा और कमांड को सेंड करने के लिए जो एक्टिविटी होता है हम कंप्यूटर को कुछ डाटा देंगे कंप्यूटर हमारे हमसे कुछ कमांड लेगा उस एक्टिविटी को हम बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में इनपुट Okay. Next question for you. Which one among of the following is not a basic function of computer? इनमें से कंप्यूटर का एक फंक्शन नहीं है जो 4 चीज दिए गए हैं इनमें से एक कंप्यूटर का फंक्शन नहीं है ऑप्शन ए एक्सेप्ट एंड प्रोसेस डाटा Option B, store data. Option C, scan text. And option D, accept input. कंप्यूटर का एक फंक्शन नहीं है इनमें से एक कंप्यूटर का फंक्शन नहीं है स्कैन टेक्स्ट इनपुट तो होता है स्टोर भी होता है और जो डाटा प्रोसेसिंग भी होता है तो स्कैन टेक्स्ट नहीं होता कंप्यूटर का 5 काम होता है इनपुटिंग स्टोरिंग प्रोसेसिंग आउटपुटिंग एंड कंट्रोलिंग तो इनमें स्कैनिंग कोई ऑप्शन नहीं है स्कैनिंग इति नहीं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू नॉट वेटिंग फॉर द आंसर दिस द वेरी सिंपल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू
which of the following options perform arithmetic and logical operations? इनमें से कौन लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशन का परफॉर्म करता है? सीपीयू में दो पार्ट्स होते हैं, वन होता है एएलयू, अनदर होता है क्या, जो होता है सीयू। तो एएलयू में सारा अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन का परफॉर्म होता है, तो सीपीयू में ये सारा चीज होता है अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन का। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। The control unit CU and the arithmetic logic unit ALU together are commonly called computational unit, storage unit, streaming unit, and processing unit. Control unit and arithmetic logic unit together are called known as or commonly known as processing unit. तो इसको बोलते हैं हम सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड सीयू jointly known as central processing unit, which is the brain of our computer system. These topics are very interesting things. These topics are very useful things. Whatever the questions we have covered in this class, these are very useful, and the question pattern is like that. Question pattern madhya tame emti mu jo shailee re pacharuchi je sabu bele emti simply nathiba, jemti ki one रे आई सीरियली सजेइबा, तो जहाँ भी पैटर्न रे डिस्कशन करा जाउची, ऑल आर द हेल्पफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशंस लाइक एसएससी, सीजीएल and different type of banking exams, whatever you can attend, and these are very useful to you. Time is very short, so today's time completed here. Thank you all for joining this class.